Uh, Political discourse, for all you students out there, is the use of language and other forms of communication to shape political understanding and action. It is the way we talk about politics, the arguments we make, and stories we tell about political events and actors. Political discourse is important because it helps us to make sense of the political world and to decide how to act in it. Political discourse in India has evolved significantly over time, reflecting the country's diverse history, social fabric, and political landscape. Early political discourse in India was shaped by the struggle for independence from British rule. The thrust was on national unity, social justice, and economic development. It focused on themes of national self-determination, freedom from colonial oppression, and the creation of a just and equitable society. Post-independence, the Constitution of India, which we adopted in 1950, enshrined the ideals of secularism, democracy, and social justice, laying the foundation for a modern republic. Political discourse of this period centered on issues of economic planning, land reform, education, and healthcare. Leaders like Nehru articulated visions for India's development, emphasizing the role of the state in shaping economic and social progress. Then we come to the 1990s. The 1990s ushered in a new phase of Indian politics with the adoption of, liberalization and globalization policies. Political discourse in the 90s began to reflect these changes, with debates emerging around issues of globalization, privatization, and the role played by market economy. In recent years, Indian politics has been characterized by a more polarized and a very fragmented kind of a discourse. Issues of social identity, religious polarization, and nationalism have gained prominence, often overshadowing policy debates. We all know what goes on in the parliament these days. The rise of social media and digital platforms has transformed the way political messages are disseminated and consumed. While this has provided new avenues for political engagement, it has also amplified the spread of misinformation and hate speech. Political discourse in India today is marked by a complex interplay of historical legacies, contemporary challenges, and the influence of new technologies and political actors. Navigating these dynamics will be crucial for shaping India's future and addressing the pressing issues facing the nation. Friends, to discuss these and other relevant issues, we have a very distinguished panel. We have a journalist, we have an author, historian, and we have a career politician. And the structure we'll follow is, we'll allow the three panelists to speak for as long as they want to. And then immediately we'll throw the session open to the House. And you can ask as many questions as you want of these eminent panelists. I'll start with the lady, Nidhi ma'am. Over to you. We have a very young crowd, so I'll keep it very short, and probably the rest of the panel can also weigh in. So I'll begin with my personal experience. Today we are sitting on a day when Rajasthan is voting. And I just traveled extensively through Rajasthan and came back this Sunday covering the elections. And what struck me was that what we haven't brought out so far is, the cotton crop has failed there. The belt extends from Ganganagar towards Bhatinda and Sirsa in Haryana and Punjab. The cotton crop has failed. The paddy, it's the paddy harvest season, all of us know. And paddy crop the yield has dropped by 80% in Rajasthan. And that was because of unseasonal rains. Maize has been hit. And there is the problem of that, always that, that belt is always plagued by farm distress.
and the perpetual crib factors about schools and teachers not being there, and some teachers not even the state is suddenly changing to English medium schools. So what struck me was that none of these issues were being flagged when I went around talking to the people. Not even a single issue was talked about. They weren't talking about the cotton crop. They weren't talking about the rice. They are entitled to compensation from the government, and they did some vague math when I asked them that what exactly is wrong. So what is your problem area? What is it? They are not the roads. For the first time, I've been covering Rajasthan elections since 2008, did 13 and 18 as well. The roads have really, the state highways as well as national highways, they are in a really bad state. Our cities consistently across Rajasthan and as well as other states, but I'm talking specifically about Rajasthan here, that cities bear a very dilapidated look, but nothing at present seems to catch the discourse. It's not a part of our discourse. And then I asked them, so what exactly is the issue? So they thought for a while, across board, they thought for a while and said, हमारा जो उम्मीदवार है इस बार उन्होंने मीना का दे दिया है, हम लोग मैक्सिमम तो यहाँ पे गुज्जर हैं, तो इस बार इस पार्टी को नहीं देंगे, दूसरी पार्टी. I'm specifically not going to name the parties here because we're going to talk about political discourse. So from there it went to about इस बार हमें गहलोत सरकार ने 100 यूनिट बिजली फ्री दी है, अभी प्रॉमिस कर रहे हैं 200 देंगे. चिरंजीवी योजना जो है उसमें 25 लाख का मिलता था, अभी 50 लाख का मिलेगा. तो इट वाज द पॉलिटिकल डिस्कोर्स फ्रॉम say 2008 over the years till 2023 centered around either caste, which is anyways a very deep-rooted thing in our society. But the biggest problem with the problems was they weren't talking about problems. They were talking about, what they could gain from either party, what was free in that state. And it went across region. I traveled from north to east to the south to everywhere. The only place where I found the discourse actually changed was southern Rajasthan, which has always been the deprived tribal belt of Rajasthan. That's the only place they talked about tribal identity. So what I have seen this is just an anecdotal example of how the political discourse has actually changed. From where, probably as I was discussing with a fellow panelist, Arun Ji, about how in the 1990s our elections used to be fought on, or 70s the elections used to be poverty related. Or we had, roti kapda makan issues. When we provided the basics, we talked about bijli sadak pani. When we provided, the political class provided us that, where has the political discourse gone? Even the aspirations in all these states have been taken care of by providing them mobile phones. That's like probably mobile phones and laptops for the working class and the student class have been like the penultimate form of aspiration. It is aspirational. So even that has been provided free of cost by the state. So our discourse has now switched from even the basics of bijli sadak pani to now probably caste, religion and freebies. That's the latest. So freebies are nobody is fighting elections right now on inflation or say your rice crop or your cotton crop going bad, but these are real pain points. These are everyday pain points. So how exactly has the media also, played a part of it? I think a large part has also been played by the media, which has probably in a way very openly taken sides as well. And I think we right now need to think about what should be the shape of our political discourse right now. How is it changing, and are we really talking about the pain points, and how are we talking about them? Thank you so much, ma'am. That's, given us ample food for thought. Arunji, as somebody who's a scholar of history and
who writes on history, how do you see this entire evolutionary process of the political discourse in India? What's your take on this? देखिए, ये आपका बड़प्पन है कि आप मुझे स्कॉलरली कह रहे हैं, ठीक है। एक तो जो है ये भोजन के बाद का सत्र जो है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। तो इसमें रियल टेस्ट होता है स्पीकर्स का, जो है पैनलिस्ट का, कि कितने दमदार हैं। तो इसलिए मैं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसको मेरे से, मैं अगर हिंदी में बात करूं तो कोई समझने में दिक्कत हो, नहीं है ना, बस ठीक है। देखिए, 2-3 मूलभूत चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स होता है, जिसको हम राजनीतिक विमर्श कहते हैं, वो पूरे समाज में जो विमर्श चल रहा होता है, यानी एक पूरे सोसाइटी में जो डिस्कोर्स चल रहा होता है, वो उसका एक पार्ट होता है। सोसाइटी में जो डिस्कोर्स चलता है वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स का पार्ट नहीं होता है। जो समाज के अंदर विमर्श चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो है पॉलिटिक्स इज अ सब फंक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो हम ये देखते हैं कि समाज में, एक भारत का जो समाज है, उसका जो विमर्श है, उसमें पिछले 10, 15, 20 साल में काफ़ी बदलाव आया है, खासकर 2014 के बाद से। क्या बदलाव आया है और क्या पॉलिटिकल डिस्कोर्स चेंज हो रहा है, मैं कुछ पॉइंटर्स आपके सामने रखता हूँ। आप जैसे निधि जी ने कहा कि हम देख भी रहे हैं कि आप में से ज़्यादातर लोग बहुत यंग हैं। तो अगर आप 2014, जब नरेंद्र मोदी की सरकार, जो भाजपा की सरकार आई केंद्र में, और उसके बाद एज दे से द बीजेपी जगरनॉट स्टार्टेड रोलिंग, उससे पहले भारतीय राजनीति के डिस्कोर्स में 2 बड़े प्रोमिनेंट शब्द होते थे जो 2014 के बाद से गायब है। मैं सिर्फ ये दर्शकों के लिए भी वो रख रहा हूँ, मतलब जो अपने साथ लोग श्रोता अपने यहाँ पे हैं, कि वो भी विचार करें ऐसा क्यों हो रहा है। एक तो शब्द था धर्मनिरपेक्षता, ठीक है ना, दूसरा शब्द था सांप्रदायिकता, सेकुलरिज्म एंड कम्युनलिज्म। ये 2 शब्द अब कहीं भी डिस्कोर्स में नहीं है। नहीं तो पहले जैसे ही इलेक्शन आते थे, या पूरा जो पोलराइजेशन था पॉलिटिकल फोर्सेस का, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में यही होता था कि बीजेपी कम्युनल है। मैं उसके राइट या रॉन्ग में नहीं जा रहा हूँ, बीजेपी कम्युनल है और हम जो है धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं जो कि सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ जो है लड़ रही हैं। वो अब नहीं है। बीजेपी का डिस्कोर्स, जो अपोजिशन का डिस्कोर्स होता था, वो ये होता था कि माइनॉरिटी अपीजमेंट हो रहा है, अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण हो रहा है। अब जो है वो परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग ये हो गया है कि एक तो मैंने कहा कि ये 2 शब्द गायब हो गए। उसकी जगह जो, जिसको आप हिंदुत्व कहते हैं, आप उसको सनातन सभ्यता कह सकते हैं, सनातन संस्कृति कह सकते हैं, एक सांस्कृतिक, मतलब ऐसा लगता है देखने में कि एक अलग तरीके का कल्चरल रेनेसां हो रहा है, एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा है। अब वही लोग जो कम्युनलिज्म की बात करते थे, या अगर कोई हिंदू प्रतीक हैं उसको लेकर लोग बड़े एपोलोजेटिक होते थे, अब वही बहुत सारा जो कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज लाइंस में लोग उसको सिंबलिज्म को वियर कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं इसमें व्यक्तिगत उसमें नहीं जाना चाहता कि कांग्रेस कर रही है या एक्स कर रही है, पर मैं समाजवादी पार्टी का तो आपको एग्जाम्पल दे ही सकता हूँ कि उन्होंने भी हनुमान चालीसा करवानी शुरू कर दी यूपी में चुनाव हारने के बाद। ये एक लार्जर इशू है, ये इलेक्शन का नहीं है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसमें उनकी गलती भी नहीं है। हम ठीक है उनको अवसरवादी कह सकते हैं, क्योंकि समाज का विमर्श ऐसा है नाउ, एंड समाज का विमर्श ऐसा। मैं हमेशा एक चीज़ ये कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, जो है, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी दैट देयर इज अ वेव ऑफ हिंदुत्व और कल्चरल रेनेसां। द वेव ऑफ हिंदुत्व वॉज देयर, दैट इज वाई ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, एंड ही इज एन, हम उनसे डिफर कर सकते हैं, पर एक बड़ा बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कोर्स में जो चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि नाउ द पॉलिटिकल लीडर्स, स्पेशली जो बीजेपी ने टेम्पलेट सेट किया है, दे आर अनएपोलोजेटिक हिंदूज। मैं हमेशा एक चीज़ ये कहता हूँ, वाजपेयी जी जो थे, ठीक है ना, ही वॉज काइंड ऑफ यू कैन से, वाजपेयी एंड अडवाणी, दे वर, स्पेशली वाजपेयी जी, टू सम एक्सटेंट आई ऑलवेज थॉट जो है कि एक थोड़ा सा डिफेंसिव पोस्चर जो है उनका हिंदुत्व को लेकर जो है वो रहता था। नरेंद्र मोदी, क्योंकि पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो गाइड हो रहा है, एक और जो बड़ा डिफरेंस आया है वो ये आया है कि पहले कांग्रेस, ये विमर्श बदल भी क्यों रहा है, वो उसका कारण ये है कि पहले कांग्रेस सेंटर में थी,
कांग्रेस वर्सेस द रेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज था। आज बीजेपी सेंटर में है, बीजेपी सेंटर मतलब उस राजनीतिक विमर्श के केंद्र में है, तो बीजेपी वर्सेस द रेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज है। तो नेचुरल बात है, जो पार्टी केंद्र में होगी, केंद्र मतलब मैं सच पावर नहीं कह रहा, लेकिन जो सेंटर में एक तरीके से पूरे डिस्कोर्स के खड़ी हुई है, तो जो उसकी वोकैबलरी होगी, वो वोकैबलरी बेसिकली जो है पूरे राजनीतिक विमर्श को प्रभावित करेगी, क्योंकि विपक्ष उसको काउंटर करने की कोशिश करेगा। एक बात और ये महत्वपूर्ण है इसमें कि सोशल मीडिया के आने के बाद जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी चेंज हो गए हैं, भाषा बदल गई है, भाषा का स्तर जो है और भाषा का संस्कार भारतीय राजनीति में काफ़ी गिर गया है, और इसकी जिम्मेदारी सभी राजनीतिक दलों की है, और इसकी जिम्मेदारी बहुत हद तक मीडिया की भी है, क्योंकि मीडिया में, खासकर टेलीविज़न मीडिया में एक जो है, और सोशल मीडिया में भी, द मोर ब्रेजन यू आर द बिगर आई बॉल्स यू गेट। तो सॉफ्ट स्पोकन जो लोग हैं या कुछ जो करने वाले, उनकी बहुत ज़्यादा टेलीविज़न चैनल्स में इंटरनली अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे, मैं द अदर डे आई वाज आस्किंग अ फ्रेंड ऑफ माइन, मतलब हु इज़ अ यंगर कलीग, तो मैंने उससे पूछा, ये तुम लोग सीधा 7वें सुर में बात करते हो, जैसे ही बुलेटिन खुलता है कि प्रलय आ जाएगी, विश्व युद्ध हो जाएगा, ठीक है ना, जो है गाजा में तबाह कर दिया जो है इजराइल ने, तो मतलब तुम थोड़ा सप्तम के बजाय जो एक नॉर्मल डिस्कोर्स पे नहीं कर सकते हो जो है। तो उन्होंने बोला कि सर हम तो करना चाहते हैं, लेकिन ऊपर से वो ये कहते हैं कि शो के बाद ये कहते हैं यार ये बड़ा डल है, इसको हटाओ। सो उनकी भी एक प्रॉब्लम ये है कि सो देयर इज अ, तो टॉक्सिसिटी बहुत बढ़ गई है। पहले आप जब पॉलिटिकल डिबेट्स को देखते थे, सुनते थे, पढ़ते थे, जो है ड्रामेटिक्स ज़्यादा हो गए हैं, थिएट्रिक्स ज़्यादा हो गए हैं, जो है ऐसे शब्दों का उपयोग हमने अभी हाल में रिसेंटली देखा है जो है कि होने लगा है कि जिसमें कि जो देश में संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनके खिलाफ भी जो है असंसदीय भाषा का प्रयोग जो है वो मुझे लगता है एक लार्जर डिस्कोर्स में, देखिए जैसे वाजपेयी जी ने कहा था कि सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, ठीक है ना, डजेंट मैटर, देश रहना चाहिए। तो इस देश का जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसमें ये कुछ मुझे लगता है कि फंडामेंटल चेंजेस आ रहे हैं। समाज का जो एक और आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। 2024 का इलेक्शन आ रहा है, तो 2024 के इलेक्शन में इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये इलेक्शन ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है, ये इलेक्शन ये बहुत बड़ा इलेक्शन है। ये इलेक्शन है उन फोर्सेस के बीच में, जैसा विमर्श बन रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन क्या प्रेजेंट कर रहा है, ये दो तरीके की फोर्सेस के बीच का इलेक्शन है जो है। ये सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ को लेकर होगा ये इलेक्शन। ये सिर्फ बैलेट बॉक्स वाला जो है ये सिंपल वो नहीं है, इसके बहुत बड़े इम्प्लीकेशंस होंगे। एक वो हैं जो डीकोलोनाइज करना चाहते हैं, और एक वो हैं जो कि कॉलोनियल थॉट प्रोसेस को जो है वो प्रेजेंट करते हैं। सो दी फाइट इज़ बेसिकली, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि ये उपनिवेशवाद के विरोधी ताकतें और उपनिवेशवाद की जो धारा थी, जिसको आप मैकॉले के जो है ना की संतानें आप कहते हैं, ठीक है ना, दी ब्राउन साहिब्स, जिनको कि ये लगता है कि जो मार्क्सिस्ट या जो कॉलोनियल हिस्ट्री का हमारा जो कॉन्सेप्ट था दैट इंडिया इज़ अ नेशन इन द मेकिंग, अगर मैं इसको सिंपल 2 सेंटेंस में कहूँ, ये लड़ाई उनके बीच में है। जो अब पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो आप सारा देख रहे हैं और जो आगे इमर्ज भी होगा अगले कुछ सालों में, एक फोर्सेज हैं वो जो ये कहती हैं कि इंडिया इज़ अ नेशन इन द मेकिंग, दूसरे वो है ये कहते हैं कि एक सनातन राष्ट्र था और उस सनातन संस्कृति की जो है दोबारा से स्थापना करनी है। धन्यवाद। थैंक यू आनंद जी। Sanjay sir, you have never believed in mincing your words or beating around the bush. So of course I'd like to have your perception, your views on this issue, but also I'd like you to kind of do a bit of loud thinking on where exactly do you see this social discourse phenomenon ending up in a few years from now? Would it become more inclusive, or is it going to get even more fractious? Good afternoon, Nagpur. Nagpur, you can do better than that. You're a city of oranges. Good afternoon, Nagpur. That's a good start.
You can still do better. We will test you at the end of the entire panel discussion. First and foremost, it's a young audience, as both my fellow panelists already said. And I want to tell you कि आज जो सबसे बड़ी समस्या जो सारे नेताओं के सामने है कि वो युवा पीढ़ी की जो भी आपके अपेक्षाएं हैं, जो भी आपकी अभिलाषाएं हैं, जो आपकी उम्मीदें हैं, उसको वो समझ नहीं पाते हैं. Because the future actually belongs to you. यदि भारत का भविष्य 2024 या 2040 या 2050 जबकि भी आप देखिए, वो आपके हाथ में है. निधि ने बोला कि मुद्दों के बारे में बात नहीं हो रही राजस्थान में, ये बिल्कुल एक सच्चाई है. मैं आपको ये पूछना चाहूँगा, क्या आप एक नेता का नाम बता सकते हैं? और वैसे ही किसी का नाम मत ले लीजिए, क्योंकि मैं आपको सबूत आपसे मांगूंगा. एक नेता का नाम बताइए जो इस देश में क्लाइमेट चेंज के बारे में आज यदि उसको ये मंच दिया गया, और मैं आपके युवा पीढ़ी को पूछ रहा हूँ ये प्रश्न, जो लाल टी शर्ट पहने हुए हैं और जो कुछ लाल नहीं भी पहने हुए हैं, कि आज कितने नेता हैं जो यहाँ आकर 10 मिनट में, 1 घंटे की तो बात छोड़ दीजिए, 10 मिनट तक क्लाइमेट चेंज पे कुछ बोल सकें? एक नेता. मैं इस पर कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस का पक्ष रखता हूं और बड़े गर्व के साथ रखता हूं, लेकिन मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूं कि आज हमारे देश में, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री से लेके वित्त मंत्री से लेके सब लोग भाषण में यही कहते रहेंगे, युवा पीढ़ी के बारे में हमें सोचना चाहिए भाइयों बहनों. And I want to ask you a question, how many politicians really care about climate change? They don't. And I'll tell you why they don't. Because all politicians only care about the next election cycle. Climate change, ladies and gentlemen, is a long-term battle. आप लोग, you will be the biggest sufferer 20 years from now, 30 years from now, when many of these politicians in power will probably not exist, if I go by the normal rate of mortality. Nobody cares for you. Get that clear in your head. Therefore, you have to fight for your rights. और एक राजनेता आपको बोलेगा empowerment. All of you girls and boys heard that word, right? Empowerment, social empowerment, gender parity. Ladies and gentlemen, I have been in politics long enough. I've also worked in some of the best corporate companies of the world. Empowerment is never given to you. You have to seize the empowerment. I have been a CEO. CEO is the most reluctant to empower people, no matter how much he or she wants to. You have to seize that empowerment. If you wait for it, you can wait till the cows come home. India does not have a political discourse. I have not come here all the way taking a flight from Mumbai to Nagpur to give you some romantic illusion about this conversation. Do you want to hear the truth, or do you want me to bullshit here? Tell me, you want to hear the truth or the bullshit? Yeah, let's tell you that. There cannot be a discourse in a country, and by the way, I go on television channels practically every other alternate night, where the conversation is dominated about Pappu and Panauti. There's no hope. I'm telling you, there's no hope. I can understand the anguish and the frustration that Nidhi was talking about. Sachin Pilot, who's one of the big faces of Rajasthan, happens to be a very dear friend of mine. You have a problem. And I'll tell you what the problem is. The problem is twofold. One, which is created by people like us. When I say us, me representing the political class, and my two eminent panelists who are at least, if not full-time, at least partially part of the entire media fraternity. Both are, I'll be honest, disastrous failures. India's democracy is being failed by its politicians. And the media is an equal accessory in that project of destruction. भारत में यदि आप इस बेवकूफ़ी में बैठे हुए, इस भ्रम पे बैठे हुए हैं कि यहाँ पर प्रजातंत्र है, तो यहाँ पर प्रजातंत्र नहीं है.
क्योंकि 2014 के बाद आप आम व्यक्ति को पूछिए कि आपके अंदर जो सबसे बड़े जो दो भावना होंगे वो दो हैं, डर और आक्रोश. Let me finish. This is the problem. The moment something painful is heard, there's a protest. Anyway, let me finish. You'll get the chance to ask a question. Yeah. It's not being put. You did not. I did. I haven't named anybody. My fellow colleague also mentioned 2014 के बाद आपने कुछ नहीं कहा. मैं भी 2014 के बाद बोल रहा हूँ आपको क्रोध नहीं आना चाहिए. शांत रखिए. स्प्राइट ले लीजिए. ठंड रख. Here is my point. देश में क्रोध और घृणा, यही दो चीज हम हर रोज सुनते रहते हैं. You asked me a question, where is the discourse gone? The discourse is on only one thing: us versus them. India, in my opinion, is about identity. Identity of your caste, identity of your religion, identity of which place you come from, and even identity of your gender. ये बहुत ही गंभीर एक विषय है. और यदि if you believe that India is going to change this discourse because the politician will change the discourse, it is not happening. Nobody today is talking about jobs. Your demographic dividend today is jobless, sitting on WhatsApp and probably happy to be a vigilante. Social media is today the tool of the highest level of propaganda in this country. And I'll tell you the problem, ladies and gentlemen, that you have is that you have stopped reading. आप लोग पढ़ते नहीं हैं. All of you have become convenient consumers. आप लोग PhD हैं. आप लोग यहाँ ग्रेजुएट नहीं हैं, आप PhD हैं WhatsApp यूनिवर्सिटी के. जो बकवास आ रहा है, जो बेतुका बेहुदा बकवास चीजों के बारे में प्रचार होता है, हम जो है उसको हम पूरी तरीके से उस पर विश्वास करते हैं. ये जो सबसे बड़ा जो खतरा है प्रजातंत्र के लिए, वो आपने जो पूछा है प्रश्न, is going to be fake news already out there. Number 2 is the role going to be played by artificial intelligence that is going to create deep fakes and will make you look at speeches and videos in a way that you have never imagined. So my big advice to all of you, discourse यदि आपको बदलना है, ये घृणा, आक्रोश, सांप्रदायिकता, जो कहते हैं विभाजक, यदि आपको देश के प्रजातंत्र को मजबूत करना है तो खुद पढ़िए. टेलीविजन थोड़ा कम देखिए. मेरा खूबसूरत चेहरा आपको ज़्यादा नहीं दिखेगा, इट्स ओके. लेकिन I would recommend to you start reading. And my recommendation to you, start reading your history. क्योंकि आपका जो इतिहास भी जो है वो भी बदला जा रहा है. कुछ दिन के बाद वो इतिहास कुछ ऐसा चीज कहेगा जो वास्तविकता में कभी हुआ ही नहीं. तो मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि आई एम वरीड अबाउट इंडियाज पब्लिक डिस्कोर्स बिकॉज यू लेडीज एंड जेंटलमैन आर लीविंग दी, shall I say, the direction of the discourse in the hands of politicians. A politician is going to perpetuate his power. Please do not believe what you hear. I would say whenever a politician makes a speech, discount it by 85% and then start believing the credibility of that speech. Yesterday I was on the television show and some leaders were all over some temples. And one of the speeches given was कि भारत का जो संस्कार है और जो संस्कृति है वो सालों तक नहीं हुआ था, आज पिछले 8-9 साल में बदल रहा है. क्या लोग ये भी नहीं जानते कि आप यदि डेटा देखिएगा तो लगभग देश में 3 मिलियन मतलब 30 लाख मंदिर है हमारे देश में. हमारे देश में कोई खड़ा भी नहीं है. वी आर अ ब्यूटिफुल कंट्री, वी आर एन अमेजिंग कंट्री. We are an incredible country, but we are being destroyed in front of our eyes, step by step, day after day. Only you can change the narrative. Thank you. Thank you, Sanjay sir. As you can see, pretty contradictory views from the three panelists. And now I'm going to throw this session open to the House.
If you have questions, you're welcome to ask them. That gentleman at the back, in the जी हाँ, we don't have much time, so keep your question short, right? And please address your question directly to our panelist and tell them who would you like to answer the question. सवाल तीनों से कि हमारा जो संविधान संविधान में दो शब्द दिए गए, एक सोशलिस्ट और एक सेक्युलर। उसका आज के सेंचुरी में कितना इम्पोर्टेंस है एज कंपेयर टू कांग्रेस, एज कंपेयर टू बीजेपी एंड एज कंपेयर टू आरएसएस, तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सर आपने जो कहा इंडिया एक रिप्रेजेंटेटिव कल्चर का, जो कुछ भी आपने बोला सर, इंडिया इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव इन द वर्ल्ड। No opinions, please. Only questions. Okay. Only question. That is the question for me. Socialist and secular. What is the representative right? बचपन जी कहता है कि अगर किसी को सिंगल सवाल पूछो तो दो तीन लोग सवाल Why don't you answer that? We'll take आप it. We'll आंसर take it. कीजिए। मुझे करना पड़ेगा। आरएसएस और भाजपा जो देखिए ऐसा है कि जो सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द है ना, वो ओरिजिनली तो नहीं था संविधान में, बाद में डाला गया वो संविधान में इमरजेंसी के दौरान। और उसको लेके एक डिबेट भी चल रही है जो है काफ़ी लंबे समय से। और 91 में जो है वो देखिए क्या होता है कि समय काल और परिस्थितियों के अनुरूप जो है वो चीज़ों की प्रासंगिकता रहती है। जिस समय ये शब्द डाले गए होंगे, ठीक है ना, पहले तो जो डालने का तरीका था उस पर अपने में सवाल है जो है। अगर मान लीजिए डाले भी गए तो उस समय जो है कोल्ड वॉर चल रहा था, भारत का टिल्ट थोड़ा सोशलिस्ट मॉडल की तरफ था, हम कैपिटलिस्ट मॉडल की तरफ नहीं थे। और जो एक बड़ी डिबेट चल रही है, जो सेकुलरिज्म का वेस्ट का कॉन्सेप्ट था, वो हमारे यहाँ पे भी हमने एक्सेप्ट कर लिया था। जो हमारा अपना जो पंथ निरपेक्षता का जो कॉन्सेप्ट है, जो है जो सनातन सभ्यता का है कॉन्सेप्ट, वो अब इमर्ज हो रहा है, क्योंकि उस समय मेन स्ट्रीम मीडिया में, एकेडमिया में, इंटेलिजेंशिया में जो है कुछ कारण थे जिसकी वजह से जो है वो जगह नहीं थी। वो एक अलग डिबेट है बेसिकली। तो उस समय और कुछ राजनीतिक, जो उस समय का राजनीतिक, जो कि हम राजनीतिक डिस्कोर्स पे ही बात कर रहे हैं, तो उस समय का जो राजनीतिक डिस्कोर्स था और जिस तरीके की पॉलिटिकल फोर्सेस उस समय थी, तो जो सत्तारूढ़ दल था उसको सूट करता था। आज जो है वो समय काल परिस्थितियां बदल चुकी हैं, तो उनकी प्रासंगिकता शायद उतनी नहीं है जो है, मुझे ये लगता है। मैं इनके साथ पूरा मैं इत्तेफाक नहीं रखता। आई गिव यू अ शॉर्ट आंसर। इंडिया वाज ऑलवेज सेक्युलर, whether it was there in the constitution introduced by Mrs. Gandhi or not, that is not the point. Read India's constitution. Secularism is inherent. If you look at the right to freedom of religion, if you look at the entire constitution, there is no bias on the basis of religion and caste. It has always been secular. It was introduced in the constitution in a formal sense, but India has never not been a secular country. Point number one. आपने socialism पे पूछा. It's a very relevant question for today's youth. And again, this is a very young audience. I hope you are aware that 1% of Indians own close to 40% of the country's wealth. कि भारत के 1% लोग, जो बड़े उद्योगपति लोग हैं, जिनका नाम आप काफ़ी टीवी पर सुनते होंगे, 40 से ज़्यादा, मैं तो समझता हूँ उससे भी ज़्यादा, देश की पूरी संपत्ति उनके हाथ में है। यदि आपको ये सही लगता है तो आप अपना हाथ उठाएं, लेकिन आम यदि आप जाइए कहीं, आप कहीं गांव पे जाइएगा तो आपको दर्द लगेगा, क्योंकि यही सरकार, क्योंकि इस सरकार के बहुत लोगों ने कहा कि सोशलिज्म को हटा दिया जाए, लेकिन यहाँ पर तो कुछ ऐलान किया गया है कि फ्री राशंस दिए जाएंगे 80 करोड़ लोगों को। यदि सोशलिज्म का दिमाग नहीं होता तो वो आप नहीं कर पाते। निधि जी ने यहाँ पर एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि आज हर जगह आप जाइए तो लोग फ्रीबी के बारे में बात करते हैं। क्यों? यदि देश में हमारी इतनी ही प्रगति हुई, यदि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए तैयार हैं 2030 में, तो लोग फ्रीबी के लिए क्यों मांगते हैं? क्योंकि उनके पास जो उनको होना चाहिए उनके पास नहीं है। आज देश की गरीबी जो है आपको शायद यहाँ नहीं दिखता है, बंबई और दिल्ली में नहीं दिखता है, लेकिन आप यदि उड़ीसा, बिहार, जहाँ से मैं आता हूँ, उत्तर प्रदेश जाइए तो आपको दिखेगा, बंगाल में दिखेगा। दैट इज द रियलिटी ऑफ इंडिया। तो सोशलिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि यू बिकम कम्युनिस्ट। प्लीज डोंट कंफ्यूज इट।
Socialism is not about communism. It is about a philosophy of creating equity. It does not mean कि you cannot grow industry. इसका मतलब ये नहीं है कि you can't grow business. But it also means that you can't neglect the poor. And that is the only way by which this country can prosper. हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे लगभग 20% of India's population today is living below the poverty line. हमारे भाई बहन छोटे बच्चे 20% living below the poverty line. भारत में सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म होना मैं समझता हूं कि अनिवार्य है. थैंक यू. Next question. Yes. So, I know this panel is about art and the change I just had a policy perspective towards the whole discussion. Like you said that in Rajasthan, nobody is talking about, the failed crops or the terrible roads or like poor education system. So, I work for a research center where we try to find evidence for policies. Like, okay, if there are kids, there are... Question. Yeah, I just want to draw a fair Context, yeah. And like Arun spoke about how there's a lot of toxicity in media with regards to what is being discussed, what is not being discussed. And you said that we're not talking about what matters at hand. And you said that we're the generation, we should study, we should bring about that change, and probably the ideas and the changes that we bring about or talk about will bring about that change in the political discourse. Because we will tell the ministers, I don't know, this is what you have told me. But my point is that what do you think, what nudges can we use to bring forward the issues that are actually of importance, and how can we utilize that to shape our politics, shape our future? Because does that make sense? So, How would a journalist do it? so what you're trying to ask me is, how do you shape political discourse? Is that what your question? What are the nudges that can actually be there? Okay. So I do take it upon myself. The responsibility does lie on the media to tell the stories that need to be told. Okay. So here I'll just take you to so what are the pressures that I allow myself under, right? So even when this time when I went and did the elections in Rajasthan, it wasn't just politics for me. There was a burning issue on English medium schools being, mindlessly being introduced. So I did create that space when I actually went there for myself to do this. So these are nudges that will come from within the system. I need to be under that moral pressure that these stories need to be told. See, these pressures were always there. So I will disagree with Arunji here that the pressures were there even before 2014. All of us knew of these pressures. I covered for a BJP paper, I covered Congress. You think that was easy? No, that wasn't easy. Congress was the ruling party at that time, and I covered it for a BJP paper, which was Pioneer. And I admit it. See, everywhere, you guys are all young, everywhere you will get these pressures. The easiest thing is to pack up your bags and leave. The tougher thing is to stay there, dig in your heels and work around that system. It's so much tougher. As a young professional, it is tougher. The easiest thing is to walk out of the system. Say the system kharab hai. I have been hearing it when I was in college in the 90s. I have been hearing it that system kharab hai. Yaar, tumne kya kiya system ko change karne ke liye? You just packed your bags and left. That's not how it is. Stories as a media professional, I have been typecast. You think it's easy for me as a woman journalist, working woman journalist, to be on social media? No, it's not. But the easiest thing is to pack your bags and say, I don't want to engage. Well, that's what majority of the governments are doing across the world. I don't want to engage. हम बात ही नहीं करना चाहते ना. What did Sanjay Ji say? Mr. Jha said that, these conversations need to be formed by us. Why are you, it's not empowerment, हम आपको देंगे नहीं. आप खुद empower होते हो. You think it was easy for us to do all of that? All governments exert pressure. Fourth estate, I've been here around for 25 years. Do you think it was easy? All governments exert pressure.
The churning needs to come from within. He talked about climate change. You know, Kanimori is one MP who speaks about climate change. I don't think her speech is covered by the media. You think, you know, when he said that climate change एक real issue है, real issue नहीं है. आप मुझे बताइए, क्या हम नेता वोट मांगता है जब आपके पास जब आता है तो आप बोलते हो आपके एजेंडा में है कि नहीं? क्या the fact that this gentleman asked us about secular and socialist, I am worried for him and everybody. Jobs कहाँ हैं? आपने पूछा jobs कहाँ हैं? कोई नहीं बात कर रहा है. These are not conversations we are having. Why not? Next time your MLA comes, आप पूछते हैं पूरे राजस्थान में कांग्रेस का मैनिफेस्टो कब रिलीज हुआ? 3 दिन रह गए थे. बीजेपी का मैनिफेस्टो कब रिलीज होगा? 5 दिन रह गए थे. BTP, which is a tribal party, and Bharatiya Adivasi Party, who are representing the tribal interests in Rajasthan and southern part of Rajasthan, had their manifesto 1 month back. Those are the issues. And if I can add one data for all of you young people, 40 to 45% of the members of parliament, and this is cutting across all political parties, have criminal charges. And don't think these are, if you ask a politician, वो आपको जवाब में बोलेगा नहीं ये जो है ना हमारे विरोधी दल हम पर ऐसे आरोप लगा देते हैं ताकि हमारा जो शोहरत है, हमारा जो छवि है उस पर कुछ कलंक लग जाता है. ये गहरे, these are grave criminal charges including dacoity, rape, murder and violence. ये कोई मामूली कोई आरोप नहीं है उन पर. और आपके जो लॉ मेकर्स हैं उसमें 40% लोग यदि अपराधी हैं तो बॉस देश का भविष्य उज्जवल तो नहीं है. मैं ना सिर्फ एक बात ऐड करना चाहता sorry to हूँ. interrupt, I just want So to add question only. just want to add one sentence. 2 चीजें. एक तो ये कि देखिए जो राजनीति होती है या जो नेता होते हैं, चाणक्य ने, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कहा है यथा प्रजा तथा राजा. आप ये जो नेता हैं ये आप ही लोगों में से निकल के गए हैं. समाज में जब एक जनरल डिटीरियोरेशन होता है उसका रिफ्लेक्शन जो है वो समाज के हर क्षेत्र में पड़ता है. तो मुझे ये लगता है जैसा निधि जी ने भी कहा कि आप सारी चीज़ें राजनेताओं पर डाल देना ये बड़ा आसान काम होता है, लेकिन इस देश के अंदर जो बहुत सारे बड़े बड़े काम भी हुए हैं कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन वो नेताओं ने ही किए हैं. तो जैसे हर परिवार के अंदर जो है कुछ ऐसे होते हैं जो कि अप टू द मार्क नहीं होते हैं, बेईमानी भी करते हैं, गड़बड़ भी करते हैं, सब कुछ वो करते हैं. तो वो एक जो है समाज में एक जनरल डिटीरियोरेशन हो रहा है जिसका रिफ्लेक्शन है. तो सिर्फ नेताओं को बैशअप करने से कि नेता ये नहीं करते, नेता वो नहीं करते जो है, तो भाई आप लड़ लीजिए चुनाव. हमारे यहाँ तो दिक्कत ये ना कि शिवाजी होने तो चाहिए लेकिन पड़ोस के घर में. Well, friends, as you can see, these are 3 individuals who have thought long and deep over the issue, and there are really no ideological affiliations here. All right, you can see how neutral they have all been. All right, they're trying to approach the issue from a very neutral stance. Right? Unfortunately, we are running out of time. So I have time for just one more question. This gentleman here. Yeah. Your allegation against WhatsApp University, agreed if not wholly, do you mean that the print media and electronic media are 100% reliable and credible? Could you repeat that again? The print media and electronic media, are they 100% reliable and credible? Let me answer that from my experience. I think I have still a lot of faith left in the print media. I still feel that the print media, even if it may have some degree of maybe, I would not say an ideological bias, but maybe it has a perspective that may be more right or left leaning. I think the print media still gives you hope. Television, unfortunately, seems to have crumbled under the pressure of receiving government advertising. And I think there is also a lot of political pressure. I think everybody knows that. You put on any TV program today, it's as good as given. You will know what they're going to tell you. As far as social media is concerned, that's an interesting question. Social media by nature, because it belongs to everybody, is actually a democratic platform. Because today, all of you in this room
can say what you want without being edited. I'll tell you where the problem is happening with that social media. Even there are very powerful entities that have organized it into groups, and then they start trolling people in case they don't like what you say. So आज जो डर लोगों में होता है कि आज अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी मान लीजिए आप किसी की निंदा करें, और आपका कोई दोस्त यदि आपके चेहरे से थोड़ा नाखुश हो और किसी और को जाके बता पे आप पर एफआईआर लगा दे कि आपने किसी की समीक्षा की या किसी की निंदा की, तो वो एक डर लोगों में आ चुका है. आज बहुत लोग राजनीति में, मैं बता रहा हूँ, मैं संपादक लोगों को भी जानता हूँ, लोग अपने फ़ोन कॉल पर बात नहीं करते हैं, वो व्हाट्सएप पर फ़ोन करते हैं और वो एक सिग्नल है या सिग्नल पे बात करते हैं. नोबडी टॉक्स ऑन अ फोन बिकॉज एवरीबडी बिलीव्स कि उनका फ़ोन कोई ना कोई सुन रहा है, पेगासस हो या कोई और हो. दैट इज़ नॉट अ साइन ऑफ अ डेमोक्रेसी. जैसे अरुण जी ने सही कहा, अंधेरी नगरी चौपट राजा, रोज बजे लोकतंत्र का बाजा, और यही सच्चाई है हमारे देश का. लेकिन मैं इस बात पर पूरी तरीके से आपके साथ सहमत रहूँगा कि देश का भविष्य यदि आज उज्जवल नहीं है, इसका कारण हम सब लोगों का है. And I have, by the way, bashed up politicians despite the fact that I come from the political fraternity. Okay, I need to be honest about it. I have girls who are as young as you, and therefore I have a vested interest to see the young succeed. Because I know India will only succeed when you do. Good luck and all the very best to you. मैं एक बस रिजॉइंडर देना चाहता हूँ. मैंने ये नहीं कहा अंधेर नगरी चौपट राजा, जो संजय जी ने मुझे कोट कहा. और एक छोटी सी बस बात और, ये देखिए, मीडिया भी ना बेचारा वो गरीब की जोरू सबकी भाभी, ठीक है ना, कि जिसका मन आता है वो मीडिया को बैश कर देता है. मैं आपको प्रिंट मीडिया का एक चलते चलते एक एनेक्डोट बता देता हूँ. मई 1951 के अंदर एक डिबेट हुई जब फर्स्ट अमेंडमेंट भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया. उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्ब करने का या एक रिस्ट्रिक्ट करने का वहीं से वो शुरू हुआ था. दैट्स अ डिफरेंट डिबेट. त्रिपुर दमन सिंह हमारे अच्छे मित्र भी, उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब उस पर लिखी है, 16 स्टॉर्मी डेज. 16 दिन पार्लियामेंट के अंदर डिबेट हुई उसके ऊपर. बड़ी खूबसूरत डिबेट थी. मीडिया के बारे में उस समय की सरकार का क्या व्यू था, मैं सिर्फ आपको 4 लाइनें पढ़ के सुनाऊंगा और फिर आप जो है वाइंड अप कर लीजिएगा इसको. इस डिबेट के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने डिबेट में बोलते हुए कहा, इट हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ ग्रेट डिस्ट्रेस, आई एम कोटिंग, कोट, इट हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ ग्रेट डिस्ट्रेस to me to see from day to day some of these news sheets which are full of vulgarity and indecency and falsehood day after day, not injuring me or this house so much, but poisoning the mind of the younger generation, degrading their mental integrity and moral standards. It is not for me a political problem, but a moral problem. How are we to save our younger generation from this progressive degradation and the progressive positioning of their mind and spirit? और भारत के राजनीतिक विमर्श के इतिहास में उस डिबेट के अंदर पहली बार उस शब्द का इस्तेमाल हुआ था जो आप सोचते हैं कि आज इजाद हुआ है, फेक न्यूज. नेहरू कैटेगोरिकली यूज द वर्ड कि ये जो मीडिया है ये फेक न्यूज फैलाता है. तो मैंने कहा कि बेचारे मीडिया की तो जो है वो शुरू से पिटाई हो रही है, ठीक है. ऐसा नहीं है कि एक मीडिया वर्सेस पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट हमेशा चलता रहते हैं. 2 बड़ी आसान आपके पास स्केपगोट्स हैं, एक नेता को गाली निकाल दीजिए, दूसरा मीडिया को बैश कर दीजिए. मुझे लगता है कि आई थिंक द डिबेट हैज़ टू गो बियॉन्ड दैट. प्रोबेबली ये आप ही लोग, जैसे बाकी मेरे फेलो पैनलिस्ट ने कहा, आप ही लोग, हमारा तो समय निकल गया, ठीक है ना. अब आपके जिम्मे है कि आप कैसे इसका सॉल्यूशन निकालते हैं. थैंक यू.